Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Baheti and I will be teaching you SAP FI module. So today is the second class where I will be teaching you all about SAP project and its types. So today's concept is about SAP projects and its types. So we will learn what is SAP project is all about. So, project is what we can say it is a task or assignment. Okay? Uh, take a very simple example. जब हम स्कूल में थे, when we were in school, we used to get homeworks, correct? Those homeworks can be related to various subjects. Sometimes it could be maths, social science, history, and various other subjects. So those homeworks were what it was a task or an assignment for us. वो हमारे लिए task हुआ करता था, right? Those homeworks were what? Those homeworks were task या assignment for us, which we have to complete and submit it to our teachers on the very next day or over the given period of time. ठीक है? तो likewise एसएपी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एसएपी क्या है? एसएपी प्रोजेक्ट क्या है? एक टास्क है या असाइनमेंट है जो कंप्लीट करना होता है हमें. कौन कंप्लीट करेगा? वी कंसल्टेंट हैव टू कंप्लीट इट and then we have to submit it to our respective client. So we can say that project is nothing but a task or an assignment. Got it? Now SAP project is divided into four categories, which is implementation project, rollout project, upgrade project, and support project. Right? So I will be teaching you about every project, but as of now we will start with what is implementation project. तो ये समझते हैं कि like implementation project है क्या? So I will give you another example. Uh, so let's learn about implementation project. So what do we mean by implementation project is first time installation of SAP in any organization. First time installation of SAP in any organization is known as implementation project. Got it? So let me explain you this with a very simple example. See for example, मुझे है ना एक घर लेना है, घर बनवाना है, ठीक है? What I will do, I will appoint an architect who will create the blueprint and the layout of my house. Got it? And what the contractor will do, the contractor will architect क्या करेगा? Blueprint and layout बनाएगा मेरे house का. Contractor, what he will do? He will take this blueprint and layout and will construct my house according to the given specifications. Got it? Now, what the next thing will happen? The interior designer will decorate and interior designer will decorate and furnish this house so that the owner of the house, as of example, I'm taking my example, so that I can move into my house and start living in it. Got it?
So what is this? What is this? This thing has started from the scratch. Got it? हमने घर बनाया घर बनाने के लिए पहली चीजें क्या होनी पड़ेगी सबसे द वेरी foremost thing what needed land got it we need a land where this house or the home can be built got it and after that this things takes into place so if the same example we take in terms of implementation how it works let's take an example in this way now say for example implementation project का मतलब होता है फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ एसएपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो जब हम एसएपी इंस्टॉल करेंगे तो एंड देन एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो वो सब चीजें करेंगे किस पे जैसे इसमें एक लैंड था इसके लिए भी तो कुछ हमें होना पड़ेगा ना एक बेस एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाए तो इसके लिए ये क्या प्लेटफॉर्म है So, for this, I can say the platform which is needed is SAP software. Got it? This SAP software बहुत जरूरी है अगर हम जो भी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करना है तो कॉन्फ़िगरेशंस किस में करेंगे एसएपी में ही करेंगे करेक्ट तो एसएपी सॉफ्टवेयर चाहिए दिस सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड बाय whom दिस सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड बाय द टेक्निकल टीम आवर बेसिस कंसल्टेंट इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है वो हमें ये इंस्टॉल करके दे देंगे गॉट इट अब क्या है नाउ आवर वर्क स्टार्ट्स अब क्या है हमें हमारे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट मिल जाएगा क्लाइंट का मतलब क्या होता है जो भी एंड यूजर्स है देयर आर मेनी एंड यूजर्स ऑफ एसएपी सॉफ्टवेयर जो अपने डेली एक्टिविटीज या डेली डे टू डे एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी में किया करते सो से फॉर एग्जांपल टेक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ए क्लाइंट से बीपीसीएल ठीक है ये हमारा एंड यूजर है बीपीसीएल ने हमें रिक्वायरमेंट्स दिया कि ये इस तरीके से हमारा एसएपी वर्क करना चाहिए गॉट इट अब नाउ हैज आई मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया कि इसमें सब एक ही प्लेटफॉर्म में काम करते हैं फाइनेंस वाले एचआर वाले सेल्स वाले मटेरियल मैनेजमेंट वाले सब एक साथ काम करते हैं गॉट इट तो क्योंकि वी आर द फाइनेंस टीम हमें जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया जो फाइनेंस के परव्यू में जो भी रिक्वायरमेंट है वो कौन करेगा वो एफआई कंसल्टेंट करेगा गॉट इट लाइकवाइज अगर सेल्स से रिलेटेड होगा तो कौन करेगा एसडी कंसल्टेंट करेगा लाइकवाइज अगर कुछ प्रोक्योरमेंट हो गया प्रोडक्शन हो गया रॉ मटेरियल हो गया उससे रिलेटेड होगा तो एमएम कंसल्टेंट करेंगे एंड लाइकवाइज respective consultant will do their respective jobs based on the requirement of the client and on what SAP platform. This is known as implementation project. Implementation project what? It start from 100% scratch. करेक्ट हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट्स लिया एंड देन रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट हैज started working on it and they all are working on the same platform which is SAP ERP software so it start from 100% scratch and for a medium sized enterprise or organization this implementation project takes overall around 8 to 9 months to complete का मतलब क्या होता है जब सब कुछ complete हो जाएगा ना now the SAP is ready to go live SAP ready to go live का मतलब ये है कि जो हमारे client है ना BPCL now this people this organization can use this
SAP on for their daily day-to-day transactions and activities. Got it? So, अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है ना 8 to 9 months, ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्ट्रेच में कंप्लीट कर दिया जाता है. नो, इम्प्लीमेंटेशन फेज भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज भी आई मीन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी हमारा 5 phases में डिवाइड होता है. ठीक है. एंड दिस 5 phases आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट क्लास. एंड ये 5 phases कंप्लीट किया जाता है 8 to 9 months में. अब ये है कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, लाइकवाइज द रिमेनिंग फेजेस का एक टाइम ड्यूरेशन हम फिक्स कर देते हैं कि इतने से इतने टाइम लिमिट तक हमारा पहला फेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन फॉलोड बाय द अदर फेजेस. गॉट इट? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर सपोज हमने फर्स्ट जो फेज है विच इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसका 2 months का टाइम दिया तो 2 months के टाइम पे ही ये कंप्लीट होता ही है. नो, कुछ ना कुछ काम बच ही जाता है, कुछ ना कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड करने ही पड़ते, कुछ मॉडिफिकेशंस करने ही पड़ते छोटे मोटे. तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. बट या ओवरऑल द मेजर चंक ऑफ works related to each phase is completed on the defined or the predefined time जो भी हमने decide किया है in our meetings. So this is what we can say implementation phases all about. Got it? So now the next is implementation जो I'm sorry, the earlier one which I said that was all about implementation project. Phases of implementation project which I will be teaching you in next classes in the coming class. So the implementation project is what? First time implementation of any SAP ERP into any organization is implementation project. Got it? Now implementation projects के भी दो nature है. What? One is Brownfield implementation and the another one is Greenfield implementation. So what is this? Greenfield implementation and Brownfield implementation. ठीक है. ये implementation जो project है ना, ये these are the nature of project. We can say that there are even a different kind or nature of implementation project, which are Greenfield implementation and Brownfield implementation. So in future, if you come across any questions, say what nature of implementation project or what kind of implementation project you worked on, so you have to reply either you have worked on Greenfield implementation project or Brownfield implementation project. Got it? And it's not necessary that once you join any organization that you will be the part of implementation project. It all depends. You can be the part of support project as well. You can be the part of any other SAP project जो भी उस वक्त organization में हो रहा हो. Correct? So now I will explaining you what is Greenfield and Brownfield implementation with a very simple example. Let's take an example of like say there is a girl called Sarah. ठीक है. She decided कि वो एक नया कैफे अपना ओपन करेगी. ठीक है. इस कैफे को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट तो कैफे डिजाइन करना पड़ेगा. तो इसके लेआउट और डिजाइन्स डिसाइड किए जाएंगे एंड डेफिनेटली टू रन हर बिजनेस जो कि वो कैफे में जो भी अपना बिजनेस रन करेगी फॉर दैट शी विल बी नीडिंग मशीन्स और इक्विपमेंट्स. गॉट इट? तो ये जो एग्जाम्पल है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन. गॉट इट? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम सारा सब कुछ कर रही है. तो लाइकवाइज अगर यही एग्जाम्पल को हम एसएपी के टर्म्स ऑफ से पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो हम कैसे ले सकते? टेक ए सिंपल एग्जाम्पल. देयर इज ए कंपनी कॉल्ड आईटीसी.
Got it? It is an FMCG company. It deals in consumer goods, पैकेजिंग एंड ऑल सो अगर आईटीसी ये डिसाइड करती है कि उसको अपने बिजनेस को और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करना है एंड उसके जो रिसोर्सेस है विच आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास लाइक ऑल द 4 M's गॉट इट होप यू रिमेम्बर्ड इट मनी मैन पावर मटेरियल एंड मशीनरी इन चारों का भी इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो तो आईटीसी डिसाइड करती है कि वो एसएपी को इम्प्लीमेंट करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना द फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन द फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएपी ईआरपी इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन वेर एज अगर से हम फिर सारा के पास आ जाते हैं सारा सोचती है कि नहीं काफी टाइम हो गया कैफे स्टार्ट हुए इट्स बीन मेनी इयर्स नाउ सारा वांट मोर एडवांस्ड इक्विपमेंट कि चीजें और स्ट्रीमलाइन हो जाए कस्टमर्स को और ज्यादा अच्छा फील गुड फैक्टर आए तो सारा सोचती है कि एक तो कंप्लीटली उसके कैफे का कंप्लीटली नया डिजाइन होगा बिल्डअप एक मॉडर्न लुक के साथ ठीक है न्यू मॉडर्न एक लुक रहेगा प्लस जो पुराने इक्विपमेंट्स है मशीन्स है वो अब यूज नहीं करेंगे दोज ऑल विल बी डिस्कार्डेड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लेके आएंगे सो दैट जो भी इसके वैल्यूएबल कस्टमर्स है वो रिटेन रहे अनइंटरप्टली लेकिन ये तो रहेगा ही साथ में डेफिनेटली अब इतने सालों का ये जो बिजनेस कर रही है इसके डेफिनेटली डेटाज होंगे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स होंगे सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे इसके खुद के भी कुछ रेसिपीज होंगे जो वो मेंटेन करती हो कहीं पे तो ये सब रिकॉर्ड्स के भी माइग्रेट किया जाएगा अब इस नए तरीके से तो ये जो तरीका है ना इसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन गॉट इट अगर यही हम एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके समझाए तो आईटीसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं आईटीसी पहले क्या करती थी पहले से फॉर एग्जाम्पल वो ऑलरेडी कोई पुराना ईआरपी पे काम करते थे Say for example, take any example. I'm taking the example of Tele. You can take any old ERP names like QuickBook, PeopleSoft, got it, etc. ठीक है? Now, ITC को लगता है कि नहीं for betterment of its organization and एक streamline और effectively efficiently काम करने के लिए they decided to switch from Tele to new SAP ERP. The ERP is new. And what is the name of ERP? Now the name of ERP is SAP. तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरा ओल्ड ERP से न्यू ERP पे स्विच करते हैं and that is SAP, so this form of movement is known as brownfield implementation. This nature of implementation is known as ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन तो अभी भी हो रहा है पहले भी हो रहा था राइट एसएपी का फ्रेश इंस्टॉलेशन अभी भी हो रहा है फ्रेश इंस्टॉलेशन लेकिन डिफरेंस ये है लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर क्लियर मैनर you can fast forward any time because these things might take some time so हाँ तो ग्रीनफील्ड में क्या था ग्रीनफील्ड में आईटीसी ने पहली बारी एसएपी इंस्टॉल किया गॉट इट देयर वेर इन दिस केस कोई ओल्ड ईआरपी नहीं था क्या नहीं था ओल्ड ईआरपी नहीं था ठीक है वेर इज ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ आईटीसी ने पहले वो टेली पे काम करते थे देन दे डिसाइडेड टू इंस्टॉल एसएपी एज इट्स न्यू ईआरपी तो ओल्ड ईआरपी वाज देयर राइट टेली वाज द ओल्ड ईआरपी and then they switch from old ERP to new ERP which is what
SAP. Got it? And this old ERP is also known by another name, which we can say as legacy system. Legacy system means the existing ERP of any organization. In this case, the existing ERP of ITC was what? Tele. So now they are switching from legacy system to new SAP ERP system. So this nature of implementation project is known as brownfield implementation. And definitely, as I took the example of Sarah, where all the old data of Sarah will be migrated to his new setup also, because definitely she must be needing all the details, all the customers data and suppliers data. Likewise ITC को भी तो अपने data को रखना है ना, they have to maintain it. So here all the data which were maintained in old ERP, which was Tally, will be migrated to new ERP, which is our SAP. So this migration, data migration from legacy system to new ERP system is known as what? Cut over activities. Got it? इसको हम क्या कहते हैं? कट ओवर एक्टिविटीज. और ये जो कट ओवर एक्टिविटीज होता है ना, ये कट ओवर एक्टिविटीज जनरली एसएपी लाइव होने के 4 to 5 days पहले किया जाता है. हम स्टार्टिंग से नहीं कर देते. स्टार्टिंग फेज में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट तब नहीं करते. फाइनली अब जब सब फेजेस कंप्लीट हो गया है, implementation project is about to go live. Live means when the client को हम फाइनली हैंड ओवर कर देंगे and they are ready to use their SAP in their daily activities. So वो लाइव होने के 4 to 5 days पहले ही हम ये डेटा माइग्रेशन करेंगे. Now data migration भी there is a tool of migrating the data which is LSMW, and also BDC is also one kind of tool. This I will explain you in later classes. But as of for your knowledge, just letting you know that this data migration also takes place through a tool which we can most prevalent tool is LSMW tool. LSMW means Legacy System माइग्रेशन वर्क बेंच. एंड इसमें क्या होता है, ये मोनली हम मेनली ये प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें हमें टेक्निकल टीम पे इतना डिपेंडेंट, मतलब इसमें इतना क्या, इसमें डिपेंडेंट रहना ही नहीं पड़ता है. There is no involvement of technical team into it. Whereas this batch data communication, this is also a tool जहाँ पे data migration होता है, but the only difference is that we have to be dependent on the technical team into it. So this I will teach you in later classes. As of now, just for your knowledge and कि एक vague idea हो जाए आप लोग को कि ये जो migration होता है, it is done through this tool, and this takes place 4 to 5 days prior of SAP going live. And this period is known as what? This period is known as cut over activity, cut over date. I'm so sorry. This period is known as cut over date. There is this activity, the transaction, the migration of data from old ERP to new ERP, or we can say from legacy system to new SAP ERP system, is known as cut over activities. So the same I have explained in my next slide. जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया वही ये चीज इसमें है कि implementation project क्या होता है. It is first time installation of SAP in an organization. It's of two. The nature of implementation project can be divided into two parts or two categories. There could be different nature of implementation. One can be brownfield implementation, another can be greenfield implementation. In brownfield implementation, the legacy system, it gets switched from the switch to new SAP ERP system. The earlier I took the example of Tele, where the Tele ITC has decided to switch from Tele to new SAP ERP system. So definitely the data which were already recorded in Tele also will be switched from this system to new SAP system. So we can say that brownfield implementation is nothing but a data migration which takes place from legacy system to new SAP ERP system. And
it is this activity of data migration is known as cutover activity, which takes place 4 to 5 days prior of SAP going live. Got it? So brownfield implementation is switching from old legacy system to new SAP ERP system, and data migration takes place in it. This migration of data is known as cutover activity, which takes place 4 to 5 days prior of SAP going live, and these days can be known as cutover date. Whereas in case of Greenfield implementation, there is no legacy system. The first time installation of SAP as its new ERP in any organization. Since there were no legacy system, no question of data migration comes into picture. And first ERP as a SAP, this is a complete new setup. So this is all about SAP project and its type. There are even other types which I will be explaining you in my next classes. The first type was implementation project, which I have explained you, and even the nature of implementation project. So this is all about today's class. Have a nice day. Thank you.